Start by doing what necessary, then do what possible, and suddenly you are doing the impossible. Good afternoon, everyone. So, we will be doing the economy module for today. This is another lesson for the UPSC Prelims 2018. So, I hope you are doing it good. So, today we're going to do this scheme related to the government initiative. So, now let's proceed. First is Mega Food Park Scheme. Now, what is there in this scheme? Uh, this will boost obviously the food processing unit and adding the value, and you know that other schemes like Sampada, which is in line with this scheme. So, it aims to link the agriculture production to the market and maximizing the value addition, minimizing the wastage, increasing farmers' income, and creating employment opportunities. So, the scheme has a cluster based approach. Now, what do you mean by cluster based approach? Cluster based means that when the group of farmers or group of people come together for one common purpose, okay, so in this case we have the cooperatives farming, for example, like dairy farming, let's say, or farming for, let's say, Kisan tomato jam or Kisan tomato sauce. For so these all things are example, and yeah, it will be hub and spoke model, just like a cycle का जो होता है ना, ये हुआ हब, ये हब हुआ एंड ये इसका स्पोक हुआ, तो ये सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है. मेगा फूड पार्क स्कीम. देन मेगा फूड पार्क project is implemented by special purpose vehicle, which is a body corporate registered under Companies Act, ठीक है. तो ये 2013 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट state entities cooperative applying for setting up a project under the scheme are not required to form separate SPV. तो ये शायद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि SPV जो होगा वो सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है. स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मे बी दे कैन बट स्टिल इट नॉट रिक्वायर्ड. Next is financial assistance is provided in the form of grant in aid at 50% eligible project cost in the general areas and 75% eligible project cost in northeast region and difficulty areas like hilly or hilly states like Sikkim or other northeastern region, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. ठीक है. तो इट इज सब करोड़ पर प्रोजेक्ट. तो ग्रांट इन एड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50%, ठीक है, जनरल एरियाज के लिए और 75% फॉर दी स्पेशल स्टेट्स. द फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट मेज बेस मेगा फूड प्रोजेक्ट पार्क वॉज फर्स्ट लेड इन कपूरथला जो पंजाब में है. नेक्स्ट इज INAM-Pro प्लस. इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसमें एक्चुअली ये है क्या, इट इज़ अ वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेल एंड परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मेटल एंड सर्विसेज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड शिपिंग. तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस वेब पोर्टल को डिज़ाइन करेगी. इस वेब पोर्टल में जो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल्स है, प्रोक्योरमेंट है, फॉर एग्जांपल सीमेंट्स, स्टील, ब्यूटुमेन, ब्रिक्स एक्सेट्रा, तो इन सब को इसमें उस पोर्टल में डाला जाएगा. तो इट्स जस्ट लाइक डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव है. नेक्स्ट इज थर्ड वन, अनक्लेम्ड PF टू फंड द मेडिकल कॉस्ट. तो लेबर मिनिस्ट्री इसमें कर रही है फंड. तो इसमें और इसमें है खासियत क्या, प्रोवाइडिंग द मेडिकल बेनिफिट्स टू पेंशनर अंडर द EPF स्कीम.
Okay, next is EPF money becomes unclaimed after subscriber doesn't withdraw money after 61 years of age. तो ये पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये मनी वेस्ट हो जाता था, तो ये मनी को अब इसको यूज़ में लाया जाएगा। इफ़ पर्सन सेटलिंग अब्रॉड डू नॉट विड्रॉ देयर मनी विद इन 3 ईयर्स, ठीक है, पहले ये था, लेकिन अब इस स्कीम में ये जो मनी जो है, इस मनी को यूटिलाइजेशन होगा, किस में होगा, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड में, ठीक है, ये चेंजेस हैं। सो trivial fact, what is EPFO? It is a employees provident fund organization. It is a statutory body and is one of the largest social security organization in India in terms of volume of financial transaction undertaken and number of covered beneficiary. ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। द मेन फंक्शन ऑफ EPFO इज एडमिनिस्टर कंपल्सरी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। EPF में रिटायरमेंट बेनिफिट एप्लीकेबल ओनली टू द सैलरीड एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है। ओनली अगर आपको दे दे तो डोंट गेट कंफ्यूज, सैलरीड एम्प्लॉयड में ही आता है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और इट इज़ फंड टू विच बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट फिक्स्ड अमाउंट परसेंट ऑफ फॉर्मर बेसिक सैलरी अमाउंट ईच मंथ। सो इससे याद आया कि दिस बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैव अनाउंस्ड that there is certain exemption for the contribution of women employee for. So what is that percent which has been kept for the women employees contribution? So please you may comment on this section. Okay, now further, at present entire EPF amount is tax free at the time of withdrawal. Now if the employee has completed 5 years of continuous service, in budget 2018 government proposed to contribute 12% of EPF contribution. Okay, तो ये 12% है, लेकिन वेमेन के लिए कितना परसेंट कम हो गया है, तो आपको ये बताना है। Now next is hydrocarbon exploration and help. This is government launched this national data repository along with open acreage licensing पॉलिसी, ठीक है, तो इसमें OALP होता क्या है, इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा देखना है, सो डैट यू कैन डिफ्रेंशिएट, ओके, सही तरह से। द OALP part of the government's hydrocarbon exploration and licensing policy gives the exploration companies the option to select the exploration block on their own, ठीक है। ओपन से मतलब यही है कि आप खुद से एक्सप्लोर करें, ठीक है, विदाउट हैविंग टू वेट फॉर फॉर्मल बिड राउंड फ्रॉम गवर्नमेंट। अबाउट हेल्प opens up about the entire sedimentary basin for investment. Entire, this is a keyword, from domestic and foreign player. The national data repository manifested through an open acreage licensing process will be key facilitator by providing a seamless access to India's entire exploration and production. Data is processed through a digital medium to all investors. What are the key features of the help? Single uniform license for extraction exploration, open acreage licensing, ठीक है, ये उसका component आ जाता है इसमें, ठीक है। Simple and easy to administer the revenue sharing model, full marketing freedom and free pricing for crude oil and natural gas, exploration allowed during the entire contract period, zero royalty rates for deep water, ultra deep water block for first 7 years, equal weightage to work program and fiscal share, and there is no oil cess and custom duty is exempted. तो I think it's a trick दे सकता है for the prelims. So there is no oil cess and there is
custom duty is exempted, okay, not excluded. There is a difference between exclusion and exemption, ठीक है. रेवेन्यू शेयर मॉडल है, ज़ीरो रॉयल्टी रेट्स है, यूनिफॉर्म लाइसेंस है, तो ठीक है. नेक्स्ट ऑपरेशन स्वर्ण. स्वर्ण इसमें क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री इसने इस लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द सर्विसेज इन राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस फॉर क्लीननेस एंड क्वालिटी ऑफ फूड सफर्ड अ लॉट, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए. तो अंडर दिस प्रोजेक्ट द इंडियन रेलवे विल फोकस अटेंशन ऑन 10 की एरियाज, ठीक है. ये बस लॉजिकल है, पंचुअलिटी, क्लीननेस, ये सब जो होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं. मेरिट ऑर्डर डिस्पैच इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी. मेरिट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए. द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप बाय, ठीक है, तो इन एसोसिएशन विद द पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट्स पॉस्को एंड सेंट्रल electricity authority. Next, the portal displays excessive arrays of information regarding the merit order of electricity procured by states, ठीक है. ये वेब पोर्टल है, ठीक है, and gives information regarding reason for deviation from merit order. Next, advantages of the merit portal are as follows, okay. This I think just you glance through this advantages. So I think next we will go for interest subvention scheme. This will help the farmers getting the short term crop loan up to rupees 3 lakh payable with at only 4%. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 4% लो इंटरेस्ट विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म आता है और अप टू 3 लाख रुपीज़ तक. तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रख ले दिमाग में. एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय NABARD एंड RBI बोथ. तो दिस इज़ अनदर सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ओके. द interest subvention will give to public sector bank, private sector bank, cooperative bank and regional rural bank, ठीक है, इन चैनल के थ्रू मिलेगा. और NABARD विल रीफाइनेंस ऑफ कोर्स. तो ये हुआ. द स्कीम हैज़ बीन रनिंग सिंस 2006 एंड 7. ये पुराना स्कीम है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसमें ये संशोधन हुआ है, जो चेंजेस आए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके. And as measure to check the distress sale post harvest loan for storage in accredited warehouse against the negotiable warehouse receipt are available for up to 6 months for Kisan credit card holding small and marginal farmers. Next, dynamic fuel pricing. The government has dismantled the administered price mechanism for fixing the petrol and diesel price and has introduced the dynamic fuel pricing, ठीक है. In dynamic fuel pricing, the oil retailer will be daily revising the retail selling prices of the petroleum and diesel based on the import parity and market forces. This move will give a free hand to oil marketing companies like Bharat Petroleum, Indian Oil to take independent decision. India joins countries such as US and Australia, where fuel prices are fixed in tandem with the price of crude oil. Earlier, oil marketing and companies were revising prices of all fuel on the 1st and the 16th of every month, depending upon the average international price in the preceding fortnight and currency exchange rate. Next, Startup India Hub. This Ministry of Commerce and Industry has launched the Startup India Virtual Hub. So, Ministry is important here. On online platform for all stakeholder for entrepreneurial ecosystem in India, ठीक है. What it will do, it will create a marketplace where all the stakeholders can interact, exchange knowledge and enable each other to grow. It will solve the problem of information asymmetry and lack of access to knowledge, tools, expert
especially across Tier 2 and Tier 3 towns. Startup India Hub comes under the Invest India, an official investment promotion and facilitation agency of the Government of India. Now next, I think this is probably last for this session. So yeah, National Biopharma Mission. The program named Innovative or Innovate in India IQ, that is the National Biopharma Mission, was launched by government. This is the first ever industry academia mission to accelerate the biopharmaceutical development. It aspired to create an enabling ecosystem to provide or promote entrepreneurship and indigenous manufacturing in the sector. The aim of the mission is to enable and nurture an ecosystem for development or developing the capability in the pharma or biopharmaceutical to a globally competitive level over the next decade and transform the health standard of India population through affordable product development. Is a flagship program of the government ऑफ इंडिया इन कोलाब्रेशन विद द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वर्ल्ड बैंक से कोलाब्रेशन है. आई क्यू इट प्रोमिसेस टू बूस्ट द ग्रोथ कर्व फॉर डोमेस्टिक बायोफार्मा इन इंडिया. द मिशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और कॉल्ड बायरेक, a public sector undertaking of Department of Biology और बायोटेक्नोलॉजी. तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहते हैं. थैंक यू. आपको अगर ये सेशन में कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें. ठीक है, थैंक यू देखने के लिए. बाय, हैव अ गुड डे.